people got some interest into quantum mechanics in my first 2 lectures? Yes, sir. Yes, because unless until you will not get interest, it is very difficult to uh, enjoy the whole process to understanding the quantum mechanics. So it's a very important that you should take interest. Now, let me ask first one question. Whatever we have done into last classes, what are the biggest challenge we have to overcome in our mathematics? Can anybody tell me answer? To represent a Sorry, vector yes. in a multi-dimensional space. Sorry, your voice is not clear actually. To represent a vector in a multi-dimensional space. In n-dimensional space. Okay, yes. But if you will go in a very uh, uh, before in the back of this particular mathematics, the thing is that we have to make a mathematical formulation which will deal with wave particle duality as well as randomness. It isn't it? Yes. Okay, so we need to make a mathematical formulation where we will just try to make a theory which will satisfy the wave particle duality. That means your particle is particle whenever you want, your particle is particle. Your particle will behave like a wave whenever you want it is behave like a wave. Yes. And more of that thing is that there should be some randomness into the outcome. And that randomness should also come into the picture of in our mathematical formulation. So it's a big challenge. It's not a simple challenge. Okay, it's all about that shattering our perception. Why I am saying that we are just going to shatter our perception, because we are so much biased towards Newtonian mechanics that we always want our system must work like a Newtonian mechanics. So it is a very important that we should shatter our perception. You have entirely new information, you have entirely new way of mathematics, and sometime you will feel that okay, what is going on? It's a really very abstract. But even if it is abstract, even if it is very weird, it will work. And if it works, obviously we have to learn. So Einstein have told that it is very difficult to understand quantum mechanics, even if he was the one of the propagator of quantum mechanics. So it is very difficult to understand the system. It is very difficult to give the answer why it is happening and how it is happening. But we have to give the answer if it is happening. This is the mathematics which is going to suited to this particular observation of the nature. So it's a wonderful thing. So let's try to make a first step towards formulation of quantum mechanical theory. And again, today we are again in the era of developing the notation. So today we have different notation for vectors. We have different notation for a scalar product. So let's try to go for it. Are people agreed? But analogy is all about vector. What is your analogy? Now I can write my vector, A vector, as I cap A in I cap direction, and we have J cap A in J cap direction, and similarly we have K cap A in K cap direction. Isn't it? This is my definition of vector. And now if you are going to accept this particular definition, then you are going to accept the definition of a scalar product, the orthogonality, the normality, each and everything.
because we have discussed each and everything into last class. So today we will discuss a very interesting mathematics that will Hilbert mathematics belongs to Hilbert space. Mathematics belongs to Hilbert space. So it's a very abstract, very mathematical, very theoretical, but it works. So what is Hilbert space? So I am little bit making some pictorial diagram to understand this thing, because obviously mathematics at the initial level is very boring unless until you don't understand the insight of this mathematics. Obviously, once you understand the insight of this mathematics, then it will become very interesting. But initial time, when we are just in a way to understand the quantum mechanical formulation, we have to be little bit making the thing little bit physically acceptable. Okay, so what I am trying to say, suppose I have some physical system. So if I am talking about some physical system, this is the same system. Suppose I am talking about harmonic oscillator, that means you will consider a spring mass system. Your system is not a quantum mechanical system. Your system is not a classical system. What is classical and quantum is the approach to understanding the some different kind of observation. So there are two different type of formulation, two different type of mathematics, which will just try to understand, we will use to try to understand different type of observation. So suppose this is one-dimensional harmonic oscillator. In a real sense, that will always remain one-dimensional harmonic oscillator. Either you are using the quantum mechanics or you are using the classical mechanics. Are you people appreciating this particular line? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So if I am talking about this is one-dimensional harmonic oscillator, that means there are some dynamical variable associated to this. What is meaning of dynamical variable? Means the time derivative of that variable is not going to 0. So what should be the dynamical variable for this particular system? X position, isn't it? So the dynamical variable is X here. Suppose I am just talking about another system where particle is moving in a circle. Okay, so this is moving in a circle. Suppose this is your particle of mass m. This is the particle of mass m. Suppose it is moving in a circle. Then what will be that your dynamical variable? R. R is constant, so it is not a dynamical variable. It is moving in a circle. Circle means R is fixed. What is going to change? Velocity. Angular velocity. Oh, theta, isn't it? Theta. So theta can be your dynamical variable. You can assume at some particular point of time, your particle is at the angle theta. Okay. So here theta is your dynamical variable. So similarly, Zero value, no? sorry, Theta can take zero value, na, in this case. theta can? Take zero value, na, in this case. Why theta is 0? Theta is a dynamical variable. It will be just changing with the time. Okay. Okay. So if theta is not going to change, the particle is not going to move on this particular circumference of circle. Okay. Since this x is not going to change, this particle m is not going to move on a x direction. Okay. So something like this. So these are your dynamical variable. You can have something such that a particle is moving in a spiral. Something like this. So what will be your dynamical variable? R and theta. R and theta. Very nice. So that can be your R and theta. Suppose your particle is moving in a plane on a surface of table. What will be your dynamical variable?
X, Y. X, Y. X and Y, very good. The particle can move in X direction. So X and Y can be your dynamical variable. Yes. So, and this harmonic oscillator is not a quantum mechanical harmonic oscillator. This particle moving on a plane is also not a quantum mechanical particle moving on a plane. This is just a system. We have to just explain that the system is same in a classical mechanics and it is same in quantum mechanics. Now, these are your dynamical variable, and this, the particle is just, and you can see this particular variation along x-axis. You can see this particular variation along theta angle. You can see this particular variation along r as well as theta. So you can see each and everything about this particular particle. And in the classical mechanics, we will use this particular variable to solve the equation of motion, either in polar coordinate or in Cartesian coordinate or in a spherical polar coordinate, depends on symmetry of a system. Now, look at here. If this is your system, that is your real system, there is a mathematical world associated to this particular system. Mathematical world, abstract world. So there is a mathematical world associated to this particular system. For this particular system, there will be so this world can be identified as, let's say H1 is the Hilbert space associated to the harmonic oscillator. Similarly, you can have some another abstract world associated to this system. You have some another abstract world associated to this system. And this world, this abstract world, has nothing but collections of some functions and some numbers. And these functions can be imaginary function. So what is this abstract world? This is nothing but what? बताओ, मैंने जो कहा उसको repeat करो. What is this function? Collection of functions. Collection of functions. X. And Number. some number. And that function can be only real or only imaginary, or real or imaginary, both? Both. Real or Both. imaginary. Both. अब उसमें जो functions हैं, उस functions को आप ग्रीक लेटर के थ्रू दिखाते हो. साई, इसे क्या कहेंगे? पाई. इसे क्या कहेंगे? जाई. इसे क्या कहेंगे? Kai. You can have infinite number of functions. You can have n number of functions. These are notation of function. And these are assumed to be a vector. जैसे आप यहां पर वेक्टर को कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाते हो ना? यहां पर ये सारे क्या है? These will be tell you about some particular direction. These can be treated as a some vector. Now, if these are function, what will be variable of this function? X. X. Very good. Very good. क्या नाम है आपका? Sir, Varun Tiwari. वरुण. अच्छा, वरुण साहब हैं. So this will be function of X. So ये भी किसका function होगा? X का फंक्शन होगा. वेरी गुड. ये भी किसका फंक्शन होगा? X का फंक्शन होगा. ये भी किसका फंक्शन होगा? X का ही फंक्शन होगा. Agreed? So this is some function and you have some number, and number को हम कैसे दिखाते हैं? Small Roman letter में. If I am using a small Roman letter, they are what? Some number. और कैसे number है ये? Complex number. Okay? Now, ये है. अब hence they are complex number and complex functions. Then conjugate functions can be also there. Are you getting my point or Yes. not? है ना? Yes, sir. So conjugate function भी होगा.
So how you will define this conjugate function? अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये मैं so this conjugate function can be psi star. इसे क्या कहेंगे? phi star. एंड इसका जो कॉन्जुगेट फंक्शन होगा वो क्या होगा? A star, B star, C star. Are you getting this thing? If this function is there, this function is also there. Don't worry. If this function is there, then this function is also there in general. अब ये बताओ, अगर मैं इस सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं तो इसके जो हिल्बर्ट स्पेस होंगे वो किसके फंक्शन होंगे? थीटा के थीटा के फंक्शन होंगे. सो दिस साई विल बी फंक्शन ऑफ थीटा, दिस फाई विल बी फंक्शन ऑफ थीटा, दिस आई विल बी फंक्शन ऑफ थीटा, दिस काई विल बी फंक्शन ऑफ थीटा. कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके जो फंक्शंस होंगे ये बताइए किसके फंक्शन होंगे? वाई X and Y. Are you getting my point? So that will be function of X and Y. Phi can be function of X and Y. Psi, phi are just a notation. And they are different type of function. हम देखेंगे वो function कहां से आता है और क्यों आता है, कैसे आता है. That is different issue. But right now what you can see these are function of X and Y. So right now I will write each and everything in term of X only. After then we will generalize for 2-dimension and 3-dimensional system. Are you getting my point? अब मैं बता रहा हूं ये मैंने ऐसा क्यों दिया है. आप कॉमिक्स पढ़ते थे? आजकल तो लोग नहीं पढ़ते हैं. कॉमिक्स पढ़ते थे? यस या नो? हाँ? कॉमिक्स नहीं पढ़े हो? In a comics, what is meaning of this notation? Imagination. Imagination. Very good. So this notation is something like imagination, Thinking abstract. Huh? Thinking of a person. Thinking of by a person. Person जो सोच रहा है. And you can think anything, isn't it? Yes, sir. Yes, I sir. can think that I am just moving against gravity. I can think it, but it is very difficult to move against gravity, isn't it? yes sir So similarly, this system has some imagination, some abstractness. You can assume it has some mind. Okay, you can assume this particular particle has some mind and it has some imagination, and that imagination can be expressed as a mathematical term, and which is very popularly known as Hilbert space. यहां तक क्लियर है ना? yes sir Now, is that this function can be any arbitrary function? क्या ये फंक्शन कोई आर्बिट्री फंक्शन कुछ भी ले लें क्या हम? No. no नो, नहीं सर. ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना? दिस फंक्शन इज नॉट अ आर्बिट्री फंक्शन. सो क्या होगा? ऑब्वियसली दीज फंक्शंस हैव सम प्रॉपर्टी. उस फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, Yes, sir. Yes, sir. अभी तो उस पार्ट होगा उसका, अदरवाइज फिर मजा ही खत्म हो जाएगा. नाउ एनालॉजिकली बताओ, अगर मैं कहूं कि ये सारे फंक्शन वेक्टर की तरह हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? एनालॉजी हमने देख रखा है, वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर. इट इज डिफरेंट इशू. एक मिनट पहले मैं बोल लूं. इट इज डिफरेंट इशू दैट यू कैन रिप्रेजेंट वन वेक्टर बाय अ लाइन और यू कैन रिप्रेजेंट दैट वेक्टर बाय अ फंक्शन. मजा आ रहा है या नहीं? सर आप समझने की कोशिश करो, आप कितनी बड़ी चीज कर रहे हो. अभी तक वेक्टर को आप सिर्फ एक लाइन के थ्रू ही सोचते थे, बट नाउ योर वेक्टर इज नॉट अ लाइन, इट कैन बी एनी फंक्शन. और आगे जाकर उसे एब्स्ट्रैक्टनेस के रूप में देखेंगे तो इट कैन बी एनी कॉलम वेक्टर, एनी मैट्रिसेस. इजंट इट? Are you people happy? Yes. Okay, so let's try to go for a property of these all Hilbert space. So उसकी property हम देखने की
कोशिश कर रहा है। वेरी स्लो रहना है शुरू में, बहुत फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। जितना स्लो शुरू में रहोगे बाद में आप उतना फास्ट जाओगे और जी सर। उतना अच्छा करोगे। थिंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट करंटली। ट्राई टू थिंक इट, क्या हो रहा होगा, कैसा होगा, क्या कहीं हमने वैसा चीज देखा है? एटलीस्ट इन मैथमेटिक्स इस तरह की चीजों को हमें समझना होगा, है ना? सर बताओ। अभी आपने एक लाइन बोली थी कि वेक्टर एज अ लाइन और वेक्टर एज अ फंक्शन। हम्म सर वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखो, क्लियर होने वाली बात नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर मैथमेटिकल एबिलिटी। वहां पर किसी ने आपको बताया कि एक वेक्टर को मैं लाइन के थ्रू दिखा रहा हूं, ठीक है? यस सर। तो आपने उसे मान लिया और उसके वर्क को आपने किया, जी सर। ठीक है? अब हम लोग एक नए दुनिया में चलते हैं जहां पर वेक्टर जरूरी नहीं है कि एक लाइन है, वो एक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है? यस वेक्टर का मतलब क्या है? बेसिकली एक कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन हो, यही तो है। यस सर। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फंक्शन के रूप में दिखा दूं आपको, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। It means like we representing vector, any physical quantity as a vector, na? We represent the physical quantities which shows the properties No, of vector. currently, listen, your question is very nice question. Currently, we are not talking about any physical quantity. What I am talking about, a direction and some magnitude. Okay? Okay, sir. Momentum is the same momentum in quantum mechanics. The momentum is same momentum in classical mechanics. Okay? यस सर। Energy will be always in joule in quantum mechanics, always in joule in classical mechanics. But the approach to finding the energy is different in both the cases. Are you getting my point? So we can say that approach to finding the energy in a functional way in the quantum mechanics. Yes, 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 yes. And In a Direct functional way, way in in a the operator way. an अभी थोड़ा सा operator. मुझे टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 क्लास के बाद आप ही सब चीज मुझे बताने लगोगे, है ना? ठीक है? बट करंटली ट्राई टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी कैन। चलो, आप इसको हटा दो। एक्चुअली इंग्लिश वर्ड इज वेरी कंफ्यूजिंग। अब जैसे मैं वेक्टर बोलता हूं तो आपको एक लाइन नजर आ जाती है, ठीक है? लिव इट दिस वर्ल्ड। कैन यू एक्सेप्ट द वर्ल्ड मोड? Fundamental mode, first overtone, second overtone. Can you accept this thing? Yes. यस सर। Yes or no? Yes, you can accept it. So, and what is that fundamental mode? It's some function. ये जो शेप बनेगा, फंडामेंटल मोड तो ऐसा ही बनता था ना। आप +2 की बात मैं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. I am just talking about +2 kind of. This is your fundamental mode, isn't it? Yes. Yes or no? Yes. Yes. And what is your first? And it has some equation, some mathematical equation. Yes. Yes. So leave the direction, leave the term vector. You can say there is a mode. And the most and more smarter thing that you can say there is a some state. Are you getting my point? Yes, sir. You can say this is a state, one particular state. Okay, so you can use English word में आप ट्रैप मत हो. बेसिकली आप फंडामेंटल चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है? So we will discuss it in a very deep manner. Don't worry. Now this is a very interesting thing. So let's try to go for understanding what are the property of functions which belongs to some Hilbert space. Okay, what are these property? So property of function belongs to
Hilbert space. Belongs to Hilbert space. So let's try to go for some basic property. Now, so first property is addition property. I am not writing vector, okay? क्योंकि vector लिखूंगा तो आप फिर परेशान हो जाते हो. Addition. If psi belongs to Hilbert space H, let's say this is function of x, and phi belongs to same Hilbert space. If psi belongs to Hilbert space H, phi belongs to what? Same Hilbert space. Same Hilbert space का part है वो. Then psi plus phi is equal to, let's say this is your chi, and this chi x also belongs to what? Same Hilbert space. Okay. Getting this thing? And what is this? इसका नाम क्या दिया था हम लोगों ने? याद है? वेक्टर में? वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू Closure वेक्टर. relation. फील्ड प्लस फील्ड इज इक्वल टू Closure relation. फील्ड. वेव प्लस वेव इज इक्वल टू वेव. Yeah. स्टेट प्लस स्टेट इज Closure. इक्वल टू स्टेट. Closure relation. क्या कहता था इसको? क्लोजर Closure. रिलेशन. व्हाई क्लोजर? क्यों ऐसा नाम क्यों दिया? हर एक चीज के पीछे लॉजिक होती है ना. व्हाई क्लोजर? Same Hilbert space. सेम belongs- हिल्बर्ट स्पेस. वेरी गुड. एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं सारे, है ना. अब जो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला हिल्बर्ट स्पेस होगा, उसके सारे मेंबर के बिहेवियर एक ही जैसा होंगे. आप देखते हो ना, किसी भी फैमिली के मेंबर को देख के बोलता अच्छा ये तो गुप्ता जी के फैमिली का है, ऐसा कहते हो कि सब नहीं? में क्लोज रिलेशन है. सब में क्लोज रिलेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बीच की, है ना. और दूसरे को देख के बोल देते हो कि ही इज फ्रॉम द नायर फैमिली, इजंट इट? Yes, sir. है ना. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर. ओके, नाउ व्हाट शुड बी सेकंड वन? बताओ, आप लोग बताओगे मुझे फटाफट. व्हाट शुड बी सेकंड वन? Commutative relation. कम्यूटेटिव रिलेशन. वेरी गुड. साई एक्स प्लस फाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट? फाई एक्स प्लस Psi. साई एक्स. इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव. Commutative. वेरी गुड. अगला बताओ क्या होगा? बताओ, अब आप ही को बताना है. associative, एसोसिएटिव. एनालॉजी पता है तुम्हें? साई एक्स प्लस फाई एक्स प्लस काई एक्स. इसको कैसे लिख सकते हैं? साई एक्स प्लस फाई एक्स प्लस काई एक्स. इसे क्या कहेंगे? एसोसिएटिव. सेम थिंग, वैसा ही तो है. बट ये हम यहां किसके लिए कर रहे हैं? मैं वेक्टर नाम नहीं लूंगा. मैं क्या नाम लूंगा? स्टेट. ठीक है, स्टेट कहो, ये सबसे अच्छी वर्ड है. उसके नीचे आप मोड लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो नाइस वर्ड. इसको आप बोल सकते हो वेक्टर बोल सकते हो. दिस इज ऑल्सो गुड. यू कैन राइट इट मैट्रिक्स बोल सकते हो, है ना. अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है. और क्वांटम मैकेनिक्स की ब्यूटी ये है कि हमें जैसी मैथमेटिक्स चाहिए हम वैसा यूज कर लेते हैं. सो व्हाई इट इज मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्निटी का मतलब क्या है? व्हाई इट इज मॉडर्न फिजिक्स? बिकॉज आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना. इजिली आप अपना दिमाग को ओपन करके काम कर सकते हो. ओके, डोंट वरी. नाउ नेक्स्ट क्या होगा जरा बताओ? नल वेक्टर. existence of null state, नल वेक्टर. वेरी गुड. तो नल वेक्टर को कैसे डिफाइन करते थे जरा बताओ? इसमें हम किसी वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमें Zero. सेम वेक्टर मिलेगा, है ना. और इसी को आप दूसरे ढंग से लिखते हो साई एक्स प्लस माइनस साई एक्स. दैट विल बी व्हाट? 0, है ना. साई एक्स माइनस साई एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 0. सही है जी? हाँ या ना. Yes, sir. अब बताओ अगला क्या सीखना है? अगला इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? scalar multiple, क्यों ऐसा करोगे?
because it is also a part of vector. वेरी गुड, आप उसके लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो, है ना? Yes. है ना? सो यू कैन जस्ट गो फॉर, सो कैसे कर सकते हैं? सर, ए ये प्लस बी साई एक्स, इसे क्या कहेंगे? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। A plus B psi x, how you can write it? A psi x plus B psi x. You can write A psi x plus phi x. What you can write? बताओ क्या होगा? A is some scalar number. Okay? A is some scalar number. It can be real, it can be imaginary. Don't worry. क्या होगा आगे बताइए? A psi x plus A phi x. Very good. A psi x plus A phi x. You can also write AB psi x. What you can write BA psi x. लिख सकते हैं इसे. And if you were going to multiply zero number with any state or any vector, what you will get? 0. क्या सिर्फ यहीं से काम चल गया था क्या? बताओ, हाँ या ना? इसके बाद हमें क्या डिफाइन करना पड़ा था? यूनिट वेक्टर, Unit vector. यूनिट वेक्टर डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा? फंडामेंटल पे आओ, फंडामेंटल पे। norms, नॉर्म्स, Norms. नॉर्म्स डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा? Scalar product. Unless until you are not going to define a scalar product, you cannot define norms. You cannot define any orthogonality. है ना? Yes या no? Yes, sir. तो अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। यहां तक क्लियर है? ये बहुत आसान है, बट बिलीव करने वाली बात है कि हम जो कर रहे हैं वो काम करेगा। हाँ बताओ बताओ। प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट सेम ही होता है ना, मतलब दोनों में कुछ आप बार बार इंग्लिश में मत फंसो, ठीक है? सर कंपोनेंट्स लेना तो उसके लिए भी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, है ना? अनलेस अंटिल यू आर प्रोजेक्शन को डिफाइन करना है ना बेसिकली। अनलेस अंटिल यू आर नॉट डिफाइनिंग द प्रोजेक्शन, हाउ यू विल डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। सो अब यहां पर देखो, फिर से मैं एनालॉजी दे रहा हूं। अगर मैं ये लिखता था A डॉट B, आप क्या समझते थे? बताओ। The scalar product of vector A and B. Yes, you are just talking about a scalar product in a vector A and B. लेकिन यहां पर हमें स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? So in form of states. यहां पर हम दिखाएंगे साई एक्स पाई एक्स. Scalar product is defined only for function which belongs to same Hilbert space. लिख लीजिए इस लाइन को। Scalar product is defined function belongs to same Hilbert space. Belongs to what? Same Hilbert space. ठीक है, तो ये साई और फाई क्या होगा? सेम हिल्बर्ट स्पेस से होगा, मींस सेम सिस्टम के हिल्बर्ट स्पेस से होगा, है ना? नाउ ये क्या है? नोटेशन है या वैल्यू है? Notation. नोटेशन. सो दिस इज नोटेशन. इसकी वैल्यू क्या थी? Mod A, mod B, cos theta. वेरी गुड. मॉड ए A मॉड बी mod A, mod cos B, cos थीटा.
ये नंबर था या फिर फंक्शन था? नंबर. नंबर. सो स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ नंबर. नाउ यहां पर हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं साई पाई. सो यू विल जस्ट गो फॉर इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? Obviously, from all spaces minus infinity to plus infinity. So मैं लिख रहा हूं psi x pi x this equal to minus infinity to plus infinity. पहले क्या लिखा हुआ है? Psi. psi. तो इसका क्या करोगे? psi star x. What is meaning of psi star? Conjugate. state. Complex Conjugate. conjugate. है ना? So psi star is complex conjugate of psi. जो पहले लिखा हुआ उसका क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे एंड आफ्टर देन यू विल पुट इट सेम थिंग. और इंटीग्रेट किसके अबाउट करें? X. x. वेरी गुड, वेरी गुड. इंटीग्रेशन अबाउट x. और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू मस्ट बी सम फाइनाइट वैल्यू. ये वैल्यू क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट आ जाए, 0 इंटू इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाए. नो, दिस मस्ट बी ऑलवेज फाइनाइट वैल्यू. अगर ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो ये फंक्शन आपके कोई भी काम का नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. Yes? Okay. Now, so this must be some finite value, let's say alpha और c दे दो, है ना? It may be complex number, don't worry. It may be complex number. Are you getting my point? अब अगर आप, so this is a scalar product. This is definition of scalar product. अगर मैं लिखूं phi x psi x तो क्या होगा? Phi star x. वेरी गुड. Psi. क्या लिखोगे? phi star x और आगे Psi. psi x dx minus infinity to plus infinity. It is not necessary phi x psi x is equal to psi x phi x. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट भी आ जाए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है ना. a डॉट b इज इक्वल टू व्हाट? b डॉट a. क्लियर है ये? Yes. ओके. सो दिस इज योर स्केलर प्रोडक्ट. एक बार आपने स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, देन यू कैन डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन. ये एक नया चीज यहां देख रहे हैं, है ना? स्क्वायर इंटीग्रेबल. मतलब क्या? ये देखो, अगर मैं किसी फंक्शन को लेता हूं साई एक्स, आई कैन टेक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स विथ साई एक्स. लिख सकते हैं ना इसे? Yes, sir. यस, लिख सकते हैं. इसको आगे कैसे करोगे बताओ? Integration of चलो psi. बताओ. पहला वाले को क्या लिखोगे? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. पहले वाले को क्या करेंगे? Psi star x. साई स्टार एक्स. Psi. दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? Psi x. साई एक्स. इंटीग्रेट किसके बीच में करेंगे? dx. dx. अब इसे मैं मॉड साई स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? Yes, sir. लिख सकते हैं. वेरी गुड. सो दैट वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड साई स्क्वायर dx. और ये वैल्यू अगर अल्फा है एंड दिस अल्फा इज पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू, this alpha is what? Positive finite value, then psi is set to be, then psi is set to be
square integrable. साई क्या होगा फिर आपका? स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होगा. आर यू पीपल गेटिंग दिस थिंग? Sir, ठीक है. हाँ, there is no restriction na, that alpha should lie on a Hilbert space means constant क्या क्या should क्या be क्या? up. अरे आराम से क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ restriction नहीं है ना कि जो अल्फा आएगा अल्फा और इज जस्ट अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स इट. okay. It is नथिंग टू not डू विद द हिल्बर्ट. एक बार नंबर मिल गया तो आपकी दुनिया का चीज मिल गया हो, है ना? Are you getting my point? So any function which belongs to Hilbert space must be square integrable. लिख लीजिए. Any function which belongs to Hilbert space must be square integrable. Clear है ये? Now अब अगर एक बार स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हो और ऑर्थोगोनल भी देख सकते हो. क्लियर है ये? सो नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर नॉर्म ऑफ अ वेक्टर. यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. Sir, I have a doubt बोलो here. बोलो. सर जो हमें यहाँ मॉड साइज स्क्वायर लिया हुआ है, हम हम्म लोग मॉड तो सर सेम क्वांटिटी का लेते हैं ना, और कॉन्जुगेट तो उसमें दूसरा साइन होगा, तो हम लोग उसका मॉड में कैसे ले पा रहे हैं? जैसे साई एक्स को लिख लिया, सपोज ए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स. एक फंक्शन ऐसा लिख सकते हो Yes, वेयर sir. अल्फा इज ग्रेटर देन 0, के इज ग्रेटर देन 0. क्लियर है ये? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. हाँ. अब साई स्टार को बताओ क्या करेंगे. चलो साई स्टार लिखो. क्या होगा? बोलो. ए ई पावर अल्फा एक्स ए स्क्वायर स्टार e to the power माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव. बट आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है? आई विल कन्वर्ट इनटू माइनस. माइनस आई के एक्स. क्लियर है ये? यस सर. यस. अब इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्टार ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई के एक्स ए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स डी एक्स. कहां से कहां तक जाएंगे? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? ए स्टार ए इज मॉड ए स्क्वायर, दे आर कांस्टेंट, यू कैन टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? e to the power minus 2 alpha square and this will cancel, so you can find dx. अब इस इंटीग्रेशन को करना होगा. दिस इज द रियल चैलेंज. ठीक है? यस सर. क्लियर है? यस सर. ओके. अब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे नहीं करेंगे दैट इज डिफरेंट इशू. उसमें आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. 3 या 4 इंटीग्रेशन ध्यान में रखोगे, हर एक चीज होता जाएगा. क्लियर है ये? Sir, can you please repeat that question? सॉरी, Please repeat that question. आई रिपीट ईच एंड एवरीथिंग. Yes. No, sir, that part. आर यू कंफर्टेबल विद दिस वन? Yes, sir. आर यू कंफर्टेबल विद दिस वन? Yes, sir. Okay. Then I am writing psi star psi. Psi star psi dx. Now, this is your psi star. Are you comfortable? Yes, sir. This is your psi. Are you comfortable? Sir, okay, okay, sir. Now, it's ठीक है? Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay. So let's try to go for a norm of a vector.
norm of function of norm of state psi x. क्या हो जाएगा norm of state psi x? You remember what is norm? ऐसे लिखा था ना, what is norm? क्या था यहां पर? A dot A? Yes या no? Last class में Yes, sir. किया था? Yes, sir. Yes. So norms यहां पर क्या हो जाएगा? N will be Root of psi x. psi x, comma psi x. Scalar product between psi x and psi x. And what is this psi x and psi x? You can just go for integrate minus infinity to plus infinity. What will be this value? Mod psi square dx. Isn't it? Now, ठीक है ना? So these are norms of a vector. What is normalization condition? Normalized vector. Normalized vector. और normalized function. Vector नहीं लिखता हूं, आप परेशान हो गए. Now, what will be when you will get the unit vector? I dot I is equal to 1, isn't it? Yes, sir. Yes. So here, if I have psi, and what is this particular value? Minus infinity to plus infinity, mod psi square dx is equal to 1. If this is going to happen, then psi is said to be what? Normalized vector, and you can treat it as a unit vector. Isn't it? Yes, sir. Then psi x is normalized vector. So what you can do? You can divide any square integrable vector to the norms of a vector, make it unit vector, isn't it? कल मैंने यूनिट वेक्टर कैसे दिखाया था, आपको याद है? A vector divided by what? Norm of a vector. कल दिखाया था? Yes, sir. This will be always a unit vector. So your normalized function can be psi normalized, can be written as psi by psi. Same है ना? Look at here. And this can be treated as a unit vector, isn't it? Or unit function, normalized function. जो वहां unit vector कहते थे, यहां पर हम उसे क्या कहेंगे? Normalized function कहेंगे. क्या कहेंगे उसे? Normalized function. Normalized function. देखो है ना? Or what is this? This is nothing but the scalar product, something like this. So both are same thing. Don't worry. So you can treat as a function as a unit vector or normalized vector. Unit vector is normalized vector. Don't worry. Unit vector +2 तक बोलते थे. After graduation we will say it normalized vector. Don't worry. Now next हमें क्या मिला था? Sorry? It means it tells about direction. You can treat it as a direction. You can use it as a direction. Okay? Yes, sir. Now, next is what? Orthogonal vector. Orthogonal is something synonyms of perpendicular type of thing. How you prove the perpendicular vector? कैसे treat करते हो आप perpendicular vector के लिए? The dot product must be 0. Product must be 0, है ना? अब इसको dot product नहीं कहेंगे. अब थोड़ा सा smart हो जाओ. Scalar product must be 0, isn't it? Yes. If your scalar product is going to 0, that means you can say they are orthogonal vector. Perpendicular भी अब नहीं कहेंगे, क्योंकि perpendicular तो सिर्फ लाइन से एसोसिएटेड है. यहां तो हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. Actually, orthogonal vector means you cannot take projection of one vector in a direction of another vector, or projection of one vector in a direction of another vector is 0, then obviously it is perpendicular. So here, how you will define? जरा बताओ फटाफट, कोई बता सकता है क्या होगा?
ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। बताइए क्या होगा? Scalar product of psi and phi is equal to 0. Very good. Scalar product of psi and phi, which will equivalent to psi star phi. अगर ये x का ही फंक्शन है and dx कहां से कहां तक चले जाएं? minus infinity to plus infinity will be equal to 0. Then psi x and phi x are orthogonal. क्लियर है ये? देखो हमने अपना काम लगभग कर लिया। नाउ ऑर्थोनॉर्मल। व्हाट इज ऑर्थोनॉर्मल? बताइए। They are orthogonal and their mount is valid. They are unit vector but always they are orthogonal, है ना? Normalized vector as well as orthogonal vector. So here we can make a new notation, something like phi I and phi j. We are taking a scalar product of phi I and phi j. Phi I is phi 1, phi 2, phi 3 up to phi n. Yes? Yes, sir. And phi j is also phi 1, phi 2, phi 3 up to phi n. हो सकता है ये? Yes, sir. And if this value is minus infinity to plus infinity, phi I star phi j dx is equal to delta ij. What is delta ij? So chronicle delta. Kronecker delta. And इसकी वैल्यू होगी 1 if I is equal to j and 0 if I is not equal to j. And this is delta ij is very popularly known as what? Kronecker delta. क्या कहते हैं इसे? Kronecker delta. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So this is basically, now you can see, you can make any vector. Now look at, this is very interesting. और मैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करूंगा और आप इसके बारे में सोचो आपने कितनी बड़ी चीज कर ली। जस्ट लुक एट हियर। सपोज आई हैव psi and this psi is C1 phi 1, C2 phi 2, C3 phi 3 up to Cn phi n. सपोज मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं। आप तो लिखते हो ना ऐसा कुछ? कहां लिखते हो जरा बताओ? सुपरपोजिशन? यस, Opposition, interference. है ना? इंटरफेरेंस में लिखते हैं ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी सुपरपोजिशन ऐसे ही होती है। यू कैन राइट दिस थिंग। सो यहां पर किसकी सुपरपोजिशन हो रही है? फंक्शंस बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस, है ना? Yes, Yes, sir. sir. उसकी सुपरपोजिशन हो रही है। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। नाउ एंड इफ योर phi I and phi j is something like delta ij. ये मैंने क्या कहा जरा बताओ तो? So phi I, phi j orthonormal. ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं। नाउ यू कैन सी, you can create a vector or you can create a state which has how many directions? N number of directions. N number of direction. What is value of C1? Scalar. Obviously C1 is scalar, but what is C1? यहां से देखो, यहां से Product of A psi is equal to A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. What is A1? Projection in the direction of I. I cap. So this is I dot A. So now what is C1? their product Phi, of phi Integration dot of phi. minus infinity. Phi I and psi. Sorry, phi 1 and psi. Isn't it? Yes, sir. Yes. लिख सकते हैं ना C1 को? What is your C2? Phi 2 psi. Phi 2 psi.
What is your C3? 5 3 side. Phi 3 psi. Yes or no? Because Yes, sir. all other scalar product is what? 0. जैसे एक करके दिखा देते हैं तुम्हें. Don't worry. थोड़ा सा समय और लेते हैं और उसे कर दिखा देता हूं. सर हाँ, हम यहाँ मतलब नॉर्मल जब वेक्टर्स में लेते हैं तो वहाँ a बार डॉट आई कैप लिया क्या और वो सेम ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट होगा ना. डिफरेंट मतलब समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? नॉर्मल में कम्यूटेटिव रिलेशन होने के वजह से ए बार डॉट आई कैप और आई कैप डॉट ए बार दोनों सेम होते हैं. सेम होगा. यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो सकता है. दैट विल बी जस्ट अ नंबर. 1 में तो कोई डिफरेंट नहीं होगा ना. 1 तो 1 ही रहेगा. अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था तो डिफरेंट होगा. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो एक्चुअली. अरे भाई, इफ this psi and phi is some complex number, then it is different. But if it is real, then phi and psi and phi is same thing. Okay? ओके सर. हाँ, क्योंकि हाँ. वहाँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हाँ. अब देखो क्या है. अगर मैं लिखता हूं phi 1 psi, how you will write phi 1 psi? C1 phi 1 phi 1 ऐसा कर सकते ना. C2 phi 1 phi 2 plus C3 phi 1 phi 3 up to Cn phi 1 phi n. ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? What is phi 1 phi 1? यहां से 1 1 because it is what? आप इसको ऐसे डिफाइन करो. 1 if I is equal to j and 0 if I is not equal to j. So phi 1 I is equal to j or not equal to j? equal to Equal to j. Equal to j. So this value is what? 1. 1. So this value is C1 plus phi 1 phi 2 0. 0. Why? Because I is not equal to j. 0. Very good. Phi 1 phi 3 0 because Zero. I is not equal to j. I is not. Phi 1 phi n 0. 0. So you can have phi 1 psi is equal to C1. Now look at here. Do it again. Do it here. Same thing. I dot a A1 I dot I plus A2 I dot j plus A3 I dot k. 1 is equal to 1. I same. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. I dot j different or same? 0. Different. Different, and they are orthogonal Yes, as sir, well because as unit zero. vector as well as normalized, isn't it? Yes. sir. Yes. So this will be, 0. this will be, 0. this will be 1. 1. So now you are just creating the same mathematics in a different notation, isn't it? Yes, sir. And now you can see how many directions are for this particular psi. N. N number of directions. Isn't it? Yes. So can you create a abstract vector which has more than 3-dimensional space? yes sir. Yes. And they can be perpendicular to each other also? Yes sir. Yes. And who will support you? Mathematics. Hilbert space. The mathematics of Hilbert Hilbert. space. ठीक है? तो ये n डायरेक्शन वाला को प्लीज एक बार explain अरे देख लो ना कीजिए। कितने डायरेक्शन मिल गए. यहाँ पर कितने N. डायरेक्शन है बताओ? सिर्फ 3 है यहाँ पे 3 है. यहाँ पर कितने हैं? n है. N है. ठीक है? ओके. और सारे डायरेक्शन कैसे हैं यहाँ पर? सपोज ऑर्थो ऑर्थोनॉर्मल. यस सर. और यहाँ पर सारे डायरेक्शन कैसे हैं? ऑर्थो नॉर्मल. ऑर्थोनॉर्मल. एक ही चीज तो कर रहे हैं. Okay, so we will stop at this particular point. Hope you people enjoy this class. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है. आगे जाके सिर्फ यही काम करना है आपको.
यस? Yes, sir. अब आप करोगे क्या, ये जरा मुझे बताओ। अब घर में जाके करोगे क्या? खाना खाएंगे। खाना तो खाओगे ही। पढ़ाई के लिए क्या करोगे? वेरी गुड। Sir, इस चीज को रिवीजन कैसे करोगे, ये मुझे बताओ। एक बार वेक्टर वाला नोटेशन लेके फिर उसको दोबारा से हाँ, वेरी गुड। एक तरफ सारा वेक्टर वाला लिखो और एक तरफ सारा हिल्बर्ट स्पेस वाला लिखो, और दोनों को कंपेयर करो कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, और खुद को समझाओ। ठीक है? Yes, sir. और जहां जहां खुद को नहीं समझा पाते हो उसका कल आप डाउट पूछोगे। ठीक है? Okay, sir. है ना? आप अगर अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है? इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट। अभी आपको मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा, है ना? सर हाँ, सर अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन जो स्पेस है वो हिल्बर्ट स्पेस का ही एक पार्ट है, हम ये कह सकते हैं? कह सकते हैं बिल्कुल। यूक्लिडियन स्पेस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, बट विद डिफरेंट मैथमेटिक्स, है ना? यस। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, थैंक यू। Sir? हाँ बोलिए। तो ये जो अभी नेक्स्ट क्लास है क्लासिकल की, वो जस्ट अभी फिर से हाँ, अभी Join क्लासिकल मैकेनिक्स की होगी क्लास, है ना? तो ये वो बच्चे करेंगे जो मैकेनिक्स पहले से कर रहे हैं। ठीक है? यस सर। जो लोग रोटेशनल डायनामिक्स कर रहे थे, है ना? दैट इज शॉर्ट क्लास, छोटी सी क्लास है। सो आप जस्ट इसको कर सकते हो। ठीक है? So थैंक यू allow me, just I can erase the board and then I will again log in. Okay? Yes. Okay.